Students, we are on the second component of future tense, that is future continuous tense. Future continuous tense is used to express an ongoing or continued action which will occur at some point in future. It expresses future action having an ongoing nature that will expected to start in future and continued for a period of time in future. सिंपल अल्फाज में या उर्दू में हम इस एक्शन के बारे में हम उस वक्त उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस से डिफाइन करेंगे जो फ्यूचर में कहीं जाके स्टार्ट होगा और फ्यूचर में कंटिन्यू भी होगा। इस सेंटेंस को हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो मेन वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं जो कि आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो विल बी जो है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा जो इस टेंस में यूज होगा। पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट। For example, he will be feeling good tomorrow. She will be singing a song for the audience. They will be playing football in the ground. I will be writing a report. He will be coming here. इन सब सेंटेंसेस में हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है कि सब्जेक्ट के साथ हमारा विल बी एंड देन वी हैव प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के साथ विल नॉट बी एंड देन वी हैव प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ing एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स में देखें तो दे विल नॉट बी वर्किंग देयर, शी विल नॉट बी वॉचिंग अ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, आई विल नॉट बी बाइंग अ न्यू कैप, शी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें स्टूडेंट तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्यों फॉलो होगा। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब विल सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। विल यू बी हेल्पिंग द पीपल, विल ही बी टेकिंग हिज एग्जाम, विल दे बी प्लेइंग चेस, विल ही बी वेटिंग फॉर मी। So student, from all these examples we can easily infer that ये जो interrogative sentences हैं ये future continuous tense के हैं। I hope you understand this future continuous tense. Let's move to future perfect tense.